Hello, people. How are you? How is this quarantine faring for you? For me, it hasn't been that good. My gym has not been a part of my life since 2 months, more than 2 months. I guess every fitness enthusiast is feeling that way right now. Muscles have gone, their power has gone. And guys, believe me, if you're not working out from home, you need to start right now. क्योंकि फिटनेस एक वो जर्नी है, वो रोड है जो एक बार आपने ले ली तो यू टर्न नहीं ले सकते. अगर ले लिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस पर वापस आना उस रोड पे. सो गाइज, बी विद मी, कम विद मी, लेट्स डू दिस, लेट्स वर्क आउट फ्रॉम होम. एंड बिलीव मी, मेरी पार इतनी कम नहीं हुई, मसल्स ज़रूर श्रिंक हुए हैं, पार कम नहीं हुई. एंड यू नो वाई, बिकॉज आई एट क्लीन. मैंने वो पिज्ज़ा नहीं खाए, बर्गर नहीं खाए, गोलगप्पे नहीं खाए, पाव भाजी नहीं खाई, विच वी वर कुकिंग इन आवर होम्स एंड वी वर पोस्टिंग those things, right? But मैंने वो नहीं खाया. I ate clean. Now here's an example for you. So this was just one technique, one method to keep you motivated towards your goal. Guys, मत छोड़ो. Believe me, थोड़े से पुशअप, थोड़े से स्क्वाट्स, थोड़े से क्रंचेस डेली भी कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ टू कीप यू गोइंग. एट दी एंड जब जिम तुम जाओगे, स्टार्ट होगा, इक्विपमेंट से वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, तुम्हें वो ब्रंट नहीं आएगा. तो बिलीव मी, स्टार्ट ईटिंग क्लीन, पुशअप्स करना स्टार्ट करो, स्क्वाट्स करना स्टार्ट करो, एंड यू विल गेट इनटू द ग्रूव. आदत मत छोड़ो. 90 days from now.